Hello students, so here we are present here to talk about the topic movement of the substances, that is by means of two ways, that is the passive method as well as the active method. So passive in the sense which doesn't require the energy for the movement of the substances from their from their high concentration towards their low concentration, that means according to their concentration gradient. But in case of active process which requires energy for the movement of the substances against their concentration gradient, that means from the low towards the higher concentration, so which requires energy, so that is the simple active process. But in case of passive which doesn't require any kind of energy, which will lead to the movement of the substances in a very simplest method by different ways, like by means of imbibition, by means of diffusion, osmosis, facilitated diffusion, and so on, like that way. But active method are of two types: primary method as well as a secondary. Primary, which requires a hydrolysis of the ATP. Hydrolysis of the ATP will lead to the formation of ADP as well as the inorganic phosphate, so which will lead to the further movement of the substances against their concentration gradient. Whereas in case of secondary method, secondary active transportation, in which also the movement is taking place against the concentration gradient, but it requires electron motive force which is generated by the ATP molecule, so then it further allow the movement of the substances. So here first we will talk about the passive method, in which we will talk about the imbibition. So imbibition, that is the adsorption of the water molecule. They are the two basic things regarding the adsorption and absorption. Adsorption in the sense which is taking place at the surface level. Surface level is the adhering of the liquid content, so that basic process is known as the adsorption. But when the water molecule moves towards the inner side of the cell, so that is known as the absorption up to the internal level. Okay, but here we are using the term adsorption. So imbibition, that is the adsorption of the liquid by the solid particles of a substance, causing it to swell without forming a solution. Then the substance which helps in adsorbing the liquid or imbibing the liquid without forming a solution is described as the imbibant. So ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ imbibant ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ substance water ਨੂੰ adsorb ਕਰਦਾ ਵਾ. Clear? So here we are having an example of the dry seeds. So when the dry seeds, like कोई भी dry seeds नहीं, अगर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ overnight तक ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना, सो ਜਿਹੜੇ seeds ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਡਹੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ देयर सीड कोट. सो ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡਹੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾइड्स ਵਿਦ दैट ऑफ द सीड कोट्स. सो जिस दे नाल की है ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ सीड्स ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹ ਪੱਕ ਸਕਣ. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਮਾ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ मोर एनर्जी of the utilization of the gas. Okay, so here like this case, the first beaker is showing the water in which dry seeds are placed, and further overnight time period these seeds got to be swollen due to the imbibition pressure. Okay, so is there a swelling take place okay, without forming a solution, so that is the imbibition process. And also it is observed in case of the seed germination, like here seed germination also जो seed coat है water content ਨੂੰ adhere on करेगा and seed coat ਜਿਹੜੀ break down होएगी and it will lead to the further germination of the seeds. So this is the imbibition. Next is the different characteristics of the imbibition. So the plant imbibants are basically made up of the hydrophilic colloids. Hydrophilic colloids like proteins, pectic compounds, starch or the cellulose, or the agar-agar, which is known to imbibe the water 99 times. So ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਜਿਹੜਾ ਵਾ water ਨੂੰ adhere ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. And imbibition helps in holding the liquid as shells on the surface and inside the minute spaces by means of the capillary action, so which will lead to the swelling of the imbibant or the increase in the volume of the imbibant. But the volume of the imbibant which goes to be increased is less than the volume of the water which is imbibed.
मतलब जिन्ना पानी उन्हें एब्जॉर्ब किया उन्नी वॉल्यूम ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द इम्बाबेंट जो कि इंक्रीज़ हुई है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द इंटर स्पेसिस, जी क्लोज पैकिंग है वाटर मॉलिक्यूल द इंटर स्पेसिस के ज़्यादा होएगी एंड ओवर द सर्फेस ऑफ द इम्बाबेंट पार्टिकल्स ऑल्सो। सो जिससे करके किया वो कोई स्पेस नहीं रहेगी कि ईजिली मूव कर सकें। सो इट विल लेट टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इस काइनेटिक एनर्जी जी लूज हो रही है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ हीट एंड दैट हीट इज़ बेसिकली नोन एज द हीट ऑफ वैटिंग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਆਫ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਡਿੰਗ ਆਫ ਫਲੋਰ ਆਫ ਵੀਟ ਫਲੋਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀਟ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਡਹੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਹੀਟ ਆਫ ਵੈਟਿੰਗ। क्लियर। दैन नेक्स्ट इज़ द इम्बाइबेशन प्रेशर। इम्बाइबेशन प्रेशर वो प्रेशर है जो डेवलप होता वा इन द इम्बाइबेंट वैन इट कम्स इन कंटैक्ट विद द वाटर विदाउट अलाउइंग द इम्बाइबेंट टू स्वैल अप। सो इस विदाउट वो स्वैलिंग किते ही सबसटांस की स्वैलिंग किते बिना ही जो इम्बाइबेंट जोड़ा वा उस प्रेशर जनरेट हो जो क्लोज कंटैक्ट के आता पानी दे। सो दैट प्रेशर इज़ बेसिकली नोन एज द इम्बाइबेंट प्रेशर। सो नेक्स्ट जोड़ा है अपने को टर्म एंड द इम्बाइबेशन प्रेशर द रेट ऑफ इम्बाइबेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ऑब्वियस है द रेट ऑफ टेम्परेचर जो टेम्परेचर अगर वो इंक्रीज हो गया सो रेट ऑफ इम्बाइबेशन ऑल्सो गोज टू बी इंक्रीज बिकॉज इट विल लेट टू द काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सो विच विल लेट टू द increasing in the imbibation and further is the permeability of the imbibant। imbibant the permeability in the sense अगर imbibant या कोई भी substance है जो water ਨੂੰ absorb कर रहा है अगर उससे particles closely packed नहीं है so it will doesn't allow the further adhering of the water molecules because close packing है close packing होने करके easily उसके विच water दी absorption नहीं हो पाएगी। but अगर ये आप गल करते हैं loosely packed दी so loosely packed दे विच spaces present होंगी so which will allow the movement of the water content ठीक है and the adhering of the water content। so like in that way the imbibation depend upon these two particular factors। similarly next term is the diffusion। diffusion जो है that is the process in which the movement of particles that is occurring from their higher concentration or the higher diffusion pressure towards their lower diffusion pressure or the concentration gradient। so this is the particular net movement of the molecules or the ions from the region of the higher diffusion pressure or the concentration gradient towards a low concentration gradient or we can say that the movement of the gases, particles, liquids and the solids to get evenly distributed throughout the available space on account of their random kinetic motion। so in depend करता random kinetic motion ਦੇ ਉੱਤੇ। so available space ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ spreading ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so that movement of gases, particles or the liquid according to the concentration gradient that process is basically known as the diffusion। so the pressure which exerted due to the tendency of the particles of a substance to diffuse ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ diffusion pressure। means जो pressure generate हो रहा वा particles के द्वारा for substance जिन्हें move on करना या diffuse on करना वा so that particular pressure is known as the diffusion pressure। like here we are having an example of the dye in which when we place the blue dye in the water so obviously ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ water ਦੇ ਵਿੱਚ dye ਨੂੰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਾਈ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਔਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ देयर ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ देयर लोअर कंसनट्रेशन। सो वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਗੀ फ्रॉम their higher towards their lower concentration like in that sense। or simply you can use the example of the परफ्यूम्स भी तुसी कॉमनली यूज़ करते हो सो उस भी है कि जी परफ्यूम की बॉटल है इट कंसिस्टिंग ऑफ द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द परफ्यूम एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग द लोअर एंड सो दैट्स वाई द मूवमेंट ऑफ द परफ्यूम इज टेकिंग प्लेस व्हेन वी हैव टू स्प्रेड दैट पर्टिकुलर परफ्यूम ऑन आवर बॉडी। सो इट विल लेट टू द मूवमेंट ऑफ द
perfume from its higher concentration towards its lower concentration, so which led to the fragmentation.